Hi guys, I'm Dr. Sehtaj Kaur and I secured an All India rank of 1304 in this year's NEET PG examination. I am making this video to tell you guys about my secret weapon during my preparation, and that is not so secret anymore, and that is first aid. So I'm going to be talking about first aid in this video, how to use it. This video is for those people who have not read first aid before, or those who are reading it but they're not finding it that helpful. I'm going to be telling you about how to annotate your first aid and how to make it your 20th notebook, how to convert it into your 20th notebook so you have all the concise and crisp content at one place, and that is first aid. I'm sure a lot of you have already heard about this book before, and a lot of you must have tried it. And there are so many people nowadays saying that USMLE Step 1 is like the NCERT of NEET PG, or like Gita. And I totally agree with that. I remember this one day I was talking to my mother and मैंने जैसे उनको बोला कि अगर घर में आग लग जाए तो मुझको मत बचाना बट मेरी फर्स्ट एड को बचा लेना, because it really is my Gita. I had so much information concised into one book. मेरी पूरी NEET PG की प्रिपरेशन का इतना मतलब अराउंड 70 to 80% मटीरियल एक बुक के अंदर कंसाइज हो गया था, वो थी ये वो. So this is my first aid which got divided into two like this, because वो बीच में से फट गई थी. But see, so I'm going to be telling about everything कि ये बुक आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करेगी, आप कौन से सब्जेक्ट्स वैसे कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें नहीं दे रखे, तो यू विल हैव टू रेफर सम अदर नोट्स लाइक मैर और प्रेफरेंस. So everything I'll be telling you right now. So the subjects that you can read from first aid completely with annotation, of course, are physiology, biochemistry, microbiology, pathology, pharmacology, psychiatry, and medicine, and dermatology. So these 8 subjects I think everybody can revise from first aid with annotation, of course. And there are some other subjects also जिनको आप फर्स्ट एड से कर सकते हैं, that is anesthesia, orthopedics, but they are not completely given in first aid, but with some annotation and keeping another notebook aside, or 20th notebook जो चीज़ें फर्स्ट एड में नहीं दे रखी वो सारी चीज़ें आप अपनी 20th notebook में नोट कर सकते हैं for subjects like orthopedics and anesthesia and in fact gynae all. So there's this chapter in first aid called reproductive. So in that, a lot of gynec and obs and gynec is given. So if you want, you can actually, and there's a lot of space in first aid as I am going to show you. So in that space you can write down so many things, and you can paste your sticky notes and it become a really concise form of your notes. So you can actually, if you want, you can concise your gynec and obs in that reproductive chapter. So let me give you an example of microbiology. ये microbiology में gram positive bacteria का chart दे रखा है, and very nicely they have divided all the bacteria into 3 groups first, or फिर according to the reactions that they are positive to and negative to, they have further divided the bacteria like branching filaments and foci and rods, and further division हो रही है according to कि कौन सा reaction उनमें positive है, कौन से alpha hemolysis करते हैं या बीटा hemolysis या गामा hemolysis, further optogen sensitive है कि optogen resistant है. So you don't have to make the chart on your own after you do the theory. The chart is given here, so you can just read it, go through it, and एक overall idea आ जाएगा. Plus there are a lot of good mnemonics in first aid. For example, or you can see that early chiosis and anaplasmosis is given in rickettsia diseases. And the good way, nice way to remember कि कौन से granulocyte या monocyte किस में मोरना मिलेंगे कौन सी disease में. So the good mnemonic is given MEGA. So MEGA. M for monocyte, E for early chiosis, G for granulocyte, and A for anaplasmosis. And a lot of good mnemonics like these have been given in. So when I was reading fungi, chromoblastomycosis was not given in first aid, which is a very important topic. मेरे edition में नहीं दिया हुआ था. So what I did, I wrote a small paragraph about chromoblastomycosis
just below the systemic mycosis, जहाँ space available थी. And I wrote extremely important points जो बार बार questions NEET PG के previous year में आ चुके हैं and बार बार same questions ही repeat हो रहे हैं. So I just wrote 2 to 3 points about it and that's it. मेरा fungus के topics complete होते गए. So that's how you annotate your first aid. You just keep on writing the things which are not given in your first aid, which are extremely important. You know कि ये बार बार पूछते हैं but first aid में नहीं दे रखा है. There's a lot of plenty space. Just look at this. A lot of plenty space is given in first aid, so you can write anything and everything that you want. In page I'm going to show you. In this page you can see I have utilized each and every single space present in this पेज. मैंने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा है बिकॉज जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लग रही थी इसमें नहीं दे रखी है, मैंने उसको एक हाईलाइट करके अलग से लिख लिया है बगल में. एंड यू कैन सी दैट आई हैव मार्क्ड PYQ इन रेड पेन बहुत सारी जगह में. एक ही पेज पे यू कैन सी 1 2 3 4 5 मल्टीपल PYQs मार्क्ड. सो ये PYQ मार्क करने का सेंस क्या है, मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल यू आर रीडिंग इतना सारा एक पेज में इतना सारा स्टफ देखकर भी कभी कभार यू गेट ओवरवेल्म्ड कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है एक पेज के ऊपर और इनसे पढ़ा ही नहीं जाता है. तो इट्स एट दैट टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू मार्क वी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक के. जैसे अगर क्रो अगार पूछ रखा है 2 से 3 बार पूछ रखा है इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दिस मार्क इज एज PYQ. यू कैन यूज़ दैट पेन जो बिल्कुल अलग से शाइन करे, जो अलग से ब्राइटली शाइन करे. तो जब आप इस पेज को ओपन करोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा पेज पढ़ने का, तो एटलीस्ट यू कैन जस्ट लुक एट दोज PYQ. ये 4 पॉइंट्स अगर जिससे PYQ लिखा हुआ है ये 4 पॉइंट्स पढ़ लोगे तो इस पूरे पेज का भी जो मोस्ट हाई हील्ड पार्ट है वो आपके दिमाग में चला जाए. वैसे तो ये पूरा का पूरा पेज ही हाई हील्ड है. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ गुड एंड कंसाइज एंड क्रिस्प नॉलेज इन दिस पेज, तो यू हैव टू रीड दैट. बट वेन यू डोंट हैव टाइम तो ये PYQs जो मार्क्ड होते हैं ब्राइट कलर पेन से ये टाइम सेवर होते हैं एंड दीज आर रियली हेल्पफुल while revising. So one more thing that I would like to highlight about first aid is कि first aid में बहुत सारी images दे रखी हैं जो बहुत अच्छी images हैं. And NEET PG and INI-SET have been using these images again and again repeatedly in exam. तो फर्स्ट एड से डायरेक्टली ये इमेजेस उत्तर एग्ज़ाम में आ जाती है. और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर वी कैन सी कि एक थ्रोम्बोजेनेसिस का एक पूरा चार्ट दे रखा है फर्स्ट एड में. एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली नवंबर 2022 एम्स INI-SET के एग्ज़ाम में दिस चार्ट केम एज इट इज़. व्हाट दे डिड वाज कि जो रिसेप्टर्स के नाम हैं और जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम है इनको इन्होंने हाइड कर दिया था और इनके ऊपर एक एरो डाल के द क्वेश्चन वाज कि कौन से ड्रग्स हैं जो इन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं. रिसेप्टर का नाम हिडन था एंड यू जस्ट हैड टू आइडेंटिफाई द ड्रग्स एक्टिंग ऑन दैट रिसेप्टर just by seeing the image, and that image was this image. And I was not well prepared for my November INI-SET. I had not revised, although मैंने पूरी रिमैट फर्स्ट एड से ही पढ़ी थी. And I could remember कि I remember this image, but because I had not revised my syllabus at that time, so I could not answer that question. It was quite easy and I was literally क्राइंग इनसाइड कि ये टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ और ये फर्स्ट एड से डायरेक्टली उठ के आई है इमेज. एंड आई कुड नॉट आंसर दैट बिकॉज आई हैड नॉट रिवाइज्ड माई सिलेबस, विच इज़ अनदर टॉपिक विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in my previous videos. So that's what I'm saying, the importance of first aid and the importance of images given in first aid. There are so many variety of images given here which are so important. और आजकल NEET PG exactly वही images without any history, without anything, they just give you the image and you have to think the correct answer. So if you have read first aid again and again वो images हमारे दिमाग में बस जाती हैं, so you are able to answer the questions right away without thinking. One more example I want to give from dermat. और dermatology में सबसे important बात होती है images. You have dermatology is a visual branch. What you see, you just have to see and you have to diagnose without any test, any investigations. You just have to diagnose by seeing the patient, by seeing the lesion. And there are so many lesions, there are so many images as you can see in this picture.
कि कितनी सारी इमेजेस, और यही सेम इमेजेस आई हैव सीन दीज सेम इमेजेस कमिंग इन द एग्जाम विदाउट एनी हिस्ट्री, यू जस्ट हैव टू डायग्नोज. सो इस पेज पे भी आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं. लाइक बेकर्स नेबर्स नहीं दे रखा था तो और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका नहीं ऑलरेडी. सो आई जस्ट एडेड इट एट द एंड ऑफ माई पेज. जहाँ पे मुझे खाली जगह मिली वहाँ पे मैंने वो टॉपिक ऐड कर दिया जो इंपॉर्टेंट है और इसमें नहीं दे रखा. सो दैट इज ऑल यू एनोटेट योर फर्स्ट एड. इट्स सिंपल एक्चुअली, इट्स नॉट दैट टफ. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर GT, when you start doing the practicing questions every day, so you will get to know कि ये question बार बार repeated है. First you read your first aid and then you do your previous year questions and then you solve your question. Then you will get to know कि I'm not able to solve these questions and these questions were important. ये previous year हैं और मुझसे नहीं solve हुए. Then you will go back, look into your first aid and you see कि first aid में ये चीज़ नहीं दे रखी थी. So you just write it down and that is it. हो गई first aid annotated. It's not that difficult. There's one thing that I would like to add कि फर्स्ट एड पढ़ने के लिए थोड़ा सा तरीका बदलना होगा. वो क्या बदलना होगा? We are as a medical students afraid of medicine because we think medicine is so vast that how can we cover medicine in 5 days. People, medicine includes everything from top to bottom, from your head to your toe. तो सब कुछ बॉडी की सारी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब कुछ आप मेडिसिन में कैसे कवर कर सकते हो विद इन 7 days. इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बट द थिंग इज कि हम मेडिसिन के पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बन रहे. वी जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड फॉर एग्जाम ओनली सम टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट जो नीट PG के फेवरेट है या INSET के फेवरेट. एंड यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट पैटर्न. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रीड दोज अगेन एंड अगेन. नाउ मेडिसिन पढ़े कैसे? सो फर्स्ट एड पढ़ने के लिए यू हैव टू रीड सिस्टमिकली, एज इन सिस्टम वाइज आपको टॉपिक उठाना पड़ेगा. फर्स्ट एड में मेडिसिन नहीं दे रखी, बट यू डोंट हैव टू रीड मेडिसिन इफ़ यू हैव डन योर फर्स्ट एड thoroughly. आई डिड नॉट डू माई मेडिसिन फ्रॉम एनीवेयर एल्स. आई डिड माई मेडिसिन फ्रॉम फर्स्ट एड ओनली. मैंने मेडिसिन अलग से पढ़ी भी नहीं. तो फर्स्ट एड में क्या दे रखा है? सिस्टम वाइज टॉपिक्स दे रखे हैं. कार्डियोवास्कुलर अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी अलग है, GI अलग है, हिमाट अलग है, एंडोक्राइन अलग है. सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. सो दिस इज़ वेयर रीनल स्टार्ट्स इन फर्स्ट डे. तो सबसे पहले रीनल की एम्ब्रियोलॉजी दे रखी है इन 2 pages एंड उसके बाद रीनल की एनाटमी दे रखी है, दैट टू इन 1 to 1.5 pages. एंड देन वी स्टार्ट विथ फिजियोलॉजी. We know that renal physiology is important. So renal physiology in around 3 to 4 pages and very beautifully and very nicely given कि renal physiology को आप pharmacology से भी relate कर सकते हो. That is something very that you should appreciate about first aid. As you can see कि renal physiology का chapter है, but they are giving you कि कौन से receptor पे कौन से drug कब act कर रहे हैं. So it is all interlinked. Everything in renal, either physiology or pharmacology or pathology, everything is interlinked. You have to study like this only if you want to actually make the most of first aid. Okay. So from here, the renal pathology is going to start. As you can see, I have annotated here also. Dialysis नहीं दे रखा था. So medicine बहुत अच्छी नहीं दे रखी है, लेकिन एक अच्छा overview you will get. And the things which are not there, you can just add on. Like dialysis नहीं दे रखा तो सब कुछ मेडिसिन का जो dialysis वाला पार्ट था, I added it here. So pathology, after pathology, at the end you will get pharmacology. So this is from here, the renal pharmacology will start. As you can see, all the drugs of renal pharmacology are given here. Hope now you guys understand कि integrated study कैसे होती है, इस किसे बोलते हैं. कि you don't have to complete all of the medicine in just one go. You can start with cardio, 2 दिन लगा के cardio खत्म करो. But when you're studying cardio, you have to read cardio का everything. Anatomy also, embryology also, physiology, pathology, pharmacology. ये 5 चीज़ें cardio की पूरी खत्म कर दोगे तो cardio finish. तो ऐसे करते करते आपको फिजियो, पैथोलॉजी एंड मेडिसिन एंड इवन फार्माकोलॉजी अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगी. तो यू जस्ट रीड सिस्टम वाइज एंड इट मेक्स मोर सेंस टू रीड सिस्टम वाइज, बिकॉज जब सिस्टम वाइज पढ़ोगे तो सब कुछ रिलेट कर पाओगे. फिजियो को पैथ से, पैथ को फार्माकोलॉजी से रिलेट कर पाओगे. एंड व्हेन यू आर एबल टू रिलेट
all the findings, everything with each other, तो दिमाग में वो short term memory converts into a long term memory. You will be able to remember more, and that is obviously important. So studying system wise is more efficient, and it makes you remember. One more thing I would like to say, people are quite afraid of medicine. And मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने मेडिसिन पढ़ी ही नहीं थी. I did study from Davidson in my final year, but during my preparation time I did not study medicine at all. And it's very nicely said by a lot of people कि अगर तुम्हारी pharmacology and pathology strong है, if you're actually reading your pharmacology and pathology thoroughly, तो तुम्हें मेडिसिन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. कि मेडिसिन में क्या है, you're reading about diseases, right? तो डिजीज़ में क्या आती है, पहले बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी आती है, उसके बाद उसमें पैथोलॉजी क्या हो गई आती है, उसके बाद उसके क्लिनिकल सिम्टम्स एंड फीचर्स आते हैं, और उसके बाद होता है उसका ट्रीटमेंट. ये 4 चीज़ें अगर आपको आती है तो आपको मेडिसिन आती है. फिजियोलॉजी में कवर हो गई, पैथोलॉजी में कवर हो गई, और फर्स्ट एड में क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स भी दे रखे हैं पैथोलॉजी के साथ ही. द हेडिंग इज रीनल पैथोलॉजी, बट सो मेनी टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन आर गिवन इन दैट. फैनबर्नी सिंड्रोम वगैरह हो गए, या फिर हमारे रीडर सिंड्रोम हो गए, या न्यूरोलॉजी में इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट गुलियन-बार सिंड्रोम, एवरीथिंग, ये सारी डिजीजेज आपकी पैथोलॉजी के अंडर दे रखी है. और जब पैथोलॉजी के अंडर दे रखी है, साथ में उनका ट्रीटमेंट भी दे रखा है, तो वो तो गई मेडिसिन. वी डोंट हैव टू रीड मेडिसिन फ्रॉम anywhere else. Now let's talk about the subjects which are not given in first aid, that you have to read from somewhere else. So that includes anatomy. Somewhat anatomy कुछ दे रखी है first aid में, but complete anatomy you can't study from first aid because musculoskeletal में भी कुछ part दे रखा है, but you have to study it from somewhere else too. Second is forensic medicine, नहीं दे रखी. Third is PSM. Yes, PSM is not given, of course, because PSM obviously India के जो health programs वगैरह हैं, everything you have to study from some other. You can follow Dr. Vivek Jain sir or his book or any other platform that you want to join. So forensic medicine, pedia, ophthal, ENT, all these subjects are not given in first aid. इनको आपको किसी और book से refer करना ही पड़ेगा. But as long as you're talking about surgery, in fact surgery also you have to refer from somewhere else, but some of the topics of pedia and gynae and surgery, इनके कुछ 30 to 40% topics are covered in first aid. So those topics, because actually I am talking about studying in an integrated fashion, in an integrated manner. So even surgery can be studied in an integrated manner. But yes, general surgery के लिए you will have to refer to some other platform or some other book. Rest of the 40% जो topics नहीं दे रखे हैं, इनको आप annotate ही नहीं कर सकते, वो सब आप अपनी 20th नोटबुक में एक add-on नोटबुक या एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनानी पड़ेगी जो उसके अंदर आ जाएगी. जो सारे topics which have been left in first year you can put in your 20th notebook. Oh, that is it guys. That's how I use my first aid for my preparation, and I hope you found this video useful. If you liked my video, you can subscribe to my channel and hit the like button.